Let's continue with chapter 10, which is chapter 10 title is Maintenance of Public Order and Tranquility. In this, we have done part A, which was with respect to unlawful assembly, part B, with respect to public nuisance, and now we'll be doing part C, which is the urgent cases of nuisance or apprehended danger. 144. In cases where, in the opinion of the district magistrate, subdivisional magistrate, or any other executive magistrate, especially empowered by the state government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section, an immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in manner provided by Section 134, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tend to prevent obstruction, annoyance, or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety, or a disturbance of public tranquility, or a riot or an affray. So the power is again district magistrate, subdivisional magistrate, executive magistrate. Now they can proceed for immediate prevention. Yes, speedy remedy. They'll write by written order, they'll state the material fact and will be served in the manner provided in 134. 134 was what? You will be service. 134 deal with service. Two method, summon or proclamation. To direct any person to abstain from, so ये है interim measures. तो हमने 133 में ऑर्डर देंगे कंडीशनल जो 138 में एब्सोल्यूट बनता है and we have seen that there are also the power to give injunction under 142. You give the injunction because after 130, 130 and 140 is the inquiry. 141 is when there is a disobedience in case of an order. So 142 is the inquiry. That is injunction you prevent, but here it is a measure you take. Your interim measure is taken. Okay. Now, an order in this section may, in case of emergency or in case where the circumstances do not admit of serving in due time of a notice upon the person against whom the order is taken, be passed ex parte. So, अगर emergency है और circumstances ऐसे हैं कि within the time you will not be able to serve because इसमें बोला है ना कि section 134 में you will serve the order desirable to any person. If that is not possible, the notice is not possible, you go ex parte. An order under this section may be directed to a particular individual or to a person residing in a particular place or an area or to a public generally where frequenting or visiting a public place. So this is where the order is passed. हम बोलते हैं ना धारा 144 लगा दी. This is what it is. The order under this section may be directed to a particular individual or a person who are residing in a particular area. तो इस एरिया के लोगों को बोला गया कि तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे because that's very dangerous. तो कर्फ्यू लग गया. That is what it is. इसमें if you see because the 133 का पावर के 133 and 144 you will read together. 133 is a substantive power where it says कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो न्यूसेंस क्रिएट करती है जहां ऑर्डर पास होगा राइट एंड 144 जो है वो ये बोल रहे हैं कि देर इज अ sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention and speedy remedy is desirable. तो इस सिचुएशन में person residing in a particular place or area, no order under this section shall remain in force for more than 2 months from making thereof, provided that if the state government consider it necessary to do so for preventing danger to human life, health, or safety, or for preventing riot or of an affray, it may by notification direct that an order made by magistrate under this section shall remain in force for such
further period not exceeding 6 months. Time limit है 2 month, can be extended by state government for further period of 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specify. So this is 2 month and यहाँ से यहाँ तक 6 months, क्योंकि इसमें लिखा है कि further period not exceeding 6 months from the date on which order made by the magistrate would have expired. तो इस डेट पे it would have expired, तो ये इसका extension. Any magistrate may either on his own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter any order made in this section by himself or any magistrate subordinate to him or by his predecessor predecessor in office. ये इसका this talks about rescinding or alteration. State government may either on his own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter an order made by it under the provision to subsection 4. This is ये जो further extension है उसको स्टेट गवर्नमेंट अगर करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही रिमूव करेगी. Section 5, subsection 6 is received. The magistrate or the state government, as the case may be, shall afford to the applicant an opportunity of appearing before him or it, either in person or by pleader, and show causing against the order, and if magistrate or the state government, as the case may be, reject the application wholly in part, he shall not, or it shall record in writing the reason for doing so. Not that important. Okay. Now 144A. 144 say power to prohibit carrying arm in procession or mass drill or mass training with arms. District magistrate may, whenever he considers it necessary to do so for the prevention of public peace or public safety, या maintenance of public order by public notice or by order prohibit in any area within the local limits of his jurisdiction the carrying of arm in any procession or organizing, holding, taking part in any mass drill. ठीक है, ये स्पेसिफिक केस है. पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखी है कि टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. hmm hmm these are all can be used. Okay, a public notice issued or order made under this section may be directed to a particular person or a person belonging to any community, party, or organization. No public notice issued or an order made under this section shall remain in force for more than 3 months from the date on which it is issued or made. 144 का ऑर्डर कितने टाइम तक फोर्स में रह सकता है मुझे बताओ. 144 का ऑर्डर टाइम पीरियड एक्सटेंशन 6 महीने का है पर ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है 2 मंथ्स. और इसमें जो टाइम पीरियड है उसका ड्यूरेशन कितना है 3 मंथ्स. ये स्पेसिफिक केस है कि डीएम ये आर्म्ड जो वेपन जो कैरी करते हैं ना लोग उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं. The state government may, if it consider necessary to do so for the preservation of public peace or public safety, or for maintenance of public order, by notification direct that the public notice issued or order made by the district magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which such public notice or order was issued. क्या चल रही है? अच्छा, this is just the extension. Same as above. State government extend कर सकती है for further period of 6 months. Same. ये 3 months further period of 6 months by state government. State government may, subject to such control and direction as it may deem fit to impose by general special order, delegate its power under section 1, section 4 to. अच्छा ये delegation. स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भाई तुम ही डिसाइड कर लो कि एक्सटेंड करना है या नहीं करना है. Okay, so this is how we complete part C. पार्ट सी में तो दो ही सेक्शन थे 144 और 144 है. अर्जेंसी वाला था 144 तो हमें पता ही है जो हम बोलते रहते हैं धारा 144 लग गई है.
ये वो है, ये एक्चुअली नोटिस बिना दिए भी कर सकते हैं। 133 138 के ऑर्डर में तो नोटिस देना पड़ता है एक इंडिविजुअल को, और 144 का ऑर्डर जो है वो कैन बी पास इवन टू अ लोकल कम्युनिटी, कि इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पे अप्लाई होगा। 133 का स्पेसिफिक पर्सन को अप्लाई करते हैं कि तुम इस सामान को यहाँ से हटाओ बिकॉज दैट इज कॉजिंग द न्यूसेंस। बट सेक्शन 144 applies to even to the people who are living in a particular area, the public generally. It can be passed ex parte also, no need to give a notice. बट सर्व कैसे करेंगे? पब्लिकेशन से, जो उसका नोटिफिकेशन ऑर्डर आता है, that is sufficient because that is what 134 says. How will you serve? Then the time period, remember, as करो 144, 144 का 2 मंथ. How will you remember the 2 month? 144. 144. It's not a very good trick, but ठीक है, 144 2 से डिवाइड इजी होता है, 2 मंथ, because 2 into 2 is 4 and 4 4 144. थोड़ी मैथ्स है क्योंकि मुझे मैथ्स थोड़ी नंबर जल्दी याद होते हैं, तो that's how I revise it. An extension 6 months. अब 1 महीने का दो तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 6 महीने का ठीक है। 144 स्पेसिफिक केस ऑफ आर्म्ड आर्म, इसमें भी कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है। 144 के पास में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नो नो नो, 144 में 3 लोगों के पास पावर है, डीएम, एसडीएम एंड ईएम के पास पावर है, इसमें सिर्फ डीएम के पास पावर है। सो दैट्स इट। नाउ पार्ट डी करेंगे। वेट, थोड़ा सफाई करो बिकॉज ये बहुत गंदा हो गया है। ओके डन। पार्ट डी, dispute as to immovable property. Whenever an executive magistrate is satisfied from a report of police officer or upon other information that the dispute likely to cause a breach of peace exists concerning any land or water or boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date or time and to put in written statement of their respective claim as respects the fact of actual possession of the subject of dispute. इसमें क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि ये है सेट ए और ये है सेट बी का ग्रुप और ये इस प्रॉपर्टी पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के कारण शायद दंगे हो सकते हैं। भाई ये गांव है, गांव में अगर 2 ग्रुप है में झगड़े वगड़े हो सकते हैं, और या फिर ये बाउंड्री पे लड़ रहे हैं या इससे कोई पानी जा रहा है उस पे लड़ रहे हैं। तो ये जो पब्लिक, ये जो है कि इससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनको ऑर्डर देगा कि भाई तुम मेरे कोर्ट में आओ, या तो खुद आओ या फिर तुम्हारे वकीलों को भेजो। एंड उस ऑर्डर में वो डेट और टाइम स्पेसिफाई करेगा, एक रिटन स्टेटमेंट बताओ कि भाई तुम्हारे क्लेम्स क्या है, और तुम फाइल करो एक रिटन स्टेटमेंट कि व्हाट आर योर क्लेम्स, कि what are you actually fighting on. For the purpose of this section, the expression land or water includes building, market, fishery, crops, other produce of land, and the rent profits of any such property. ये एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, एक्सप्लेन कर रहा है कि लैंड और वाटर का मतलब क्या है। तो इसमें बोला है लैंड का मतलब ये नहीं है कि खाली खेती बाड़ी वाली जमीन हो, इट इंक्लूड्स अ बिल्डिंग, इट विल इंक्लूड एनी मार्केट, इट विल इंक्लूड अगर यहाँ पे पॉन्ड है और इसमें तुम्हें फिशिंग करनी है वो क्रॉप्स, इट विल इंक्लूड द रेंट प्रॉफिट एनीथिंग, तुम झगड़ा मत करो बस, any interest. The copy of the order shall be served in a manner provided by this court for the service of summon. Upon such person where the person as a magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed some conspicuous place or near the subject. ठीक है, जैसे समन इशू करते हैं, समन कैसे इशू होते हैं, डुप्लीकेट में जाते हैं, साइन करके जाते हैं, तुम लेके एक बंदा लेके जाता है, वो उस पे साइन लेके रिसिप्ट डुप्लीकेट वापस कोर्ट में सबमिट कर देता है, वो सब प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एक को अफिक्स करेंगे कहाँ पे, कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे जहाँ पे सब्जेक्ट है डिस्प्यूट। सपोज इस
इस बिल्डिंग के रेंट के ऊपर झगड़ा हो रहा है तो इस बिल्डिंग पे चिपका देंगे. The magistrate shall then, without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right to possess the subject of the dispute, pursue the statement so put in, hear the parties, receive all the evidence as may be produced by them, take such further evidence, if any, as he thinks necessary, and if possible, decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute, provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the magistrate on which the report of the police officer or other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1. मुझे ऐसा लग रहा है this question has already been asked in pre last time. Pre 2023 DJS में this statement was there. Hmm. उसमें there was a fact situation which was given कि there was a landlord who has removed tea from the property and that person और उसके लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट some criminal proceeding was undergoing and then the judicial magistrate whether can he order restoration. ऐसा कुछ था वो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है. So this becomes important यार, मुझे लगा इस पार्ट से इतने आएंगे नहीं. Okay, so it is important. Read it carefully then. क्या लिखा है? The magistrate shall then, without reference to the merit or the claim of any parties, ठीक है, इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि हाँ मजिस्ट्रेट मेरिट पे नहीं जाएगा, बस डिटरमाइन करेगा कि पोजेशन किसके पास था when the parties came before him, provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcefully and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcefully and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of the police officer or after the date and before the date of his order under subsection 1 he may treat the party so dispossessed as if party has been in possession. ये बोला है कि इस डेट पे पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पास की थी, उसके 2 महीने पहले ही किसी पार्टी को डिस्पोजेस किया था, या ये पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद या और ऑर्डर आने से पहले कोई डिस्पोजेशन हुआ होगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा कि जिस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है दैट पार्टी वाज एक्चुअली इन पोजेशन, but that is not deciding on merit. The court is not deciding on merit. So, but one thing to be kept in mind here is this: the power lies with the executive magistrate and not the judicial magistrate, right? So that's very important. Nothing in this section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed. And in such case, the minister shall cancel his said order, and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation, the order of magistrate under subsection 1 shall be final. हाँ, तो जो executive magistrate है, that magistrate orders the party to come before him because उसको लगता है कि कोई dispute existing है. तो in this section, the clause 5 says that any person can appear before the magistrate and say that there is no such dispute aforesaid exist or existed. इस situation में magistrate will cancel his order and all other further proceeding. If the magistrate decides that one of the parties was or should under the proviso 2 subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceeds under the proviso to subsection 4, may restore to the possession party forcefully and wrongfully dispossessed. This was the question. It says कि क्या judicial magistrate restore कर सकता है? Whether such तो
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज द पावर, अगर रॉन्गफुली डिस्पोजेस अगर किसी को किया गया है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल कंसीडर कि 2 महीने ये ऑर्डर, ये पुलिस रिपोर्ट फाइल करने से पहले 2 महीने पहले कौन था पोजेशन में, या रिपोर्ट होने के बाद या ऑर्डर आने से पहले कौन था पोजेशन में, जो भी था पोजेशन में उसको रिस्टोर करेंगे पोजेशन को, who has been forcefully and wrongfully dispossessed. The order made under this subsection shall be served and published in a manner laid down in subsection 3. Okay. When any party to such proceeding dies, magistrate may cause the legal representative of the deceased party to be made the party to the proceeding and shall thereupon continue the inquiry. And if any question arises as to who the legal representative of the deceased party for the purpose of such proceeding is, all the persons claiming to be the representatives of the deceased party shall be made parties thereto. तो इसमें बोला है कि अगर कोई person while the proceedings were undergoing, the person dies, then all the legal representative of the deceased party will be made party. But there are more than one legal representative. For example, 5 people are saying that I am the legal representative of the person who has been died. Then all such people will be made the party to the proceedings. If the magistrate is of the opinion that any prop or other produce of the property, the subject of the dispute in the proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceed thereof. ठीक है। आह, तो अगर कोई किस चीज पे लड़ रहे हो तुम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई ये लड़ रहे हैं किस पे, चारे पे, ये जो चारा है या फिर ये जो खेती बाड़ी है उस पे लड़ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे। अब जब तक डिसाइड नहीं हो सकता हु इज द ओनर, द कोर्ट विल टेक द पोजेशन। अभी जब तक तो गल जाएगी, छट जाएगी, बारिश हो रही है, मानसून आ रहा है, तो कोर्ट इसको डिस्पोज कर देगा। और जब ऑर्डर आएगा तो अकॉर्डिंगली सेल प्रोसीड जो भी होंगे उनको दे देंगे। Magistrate may, if he thinks fit, at any stage of the proceeding under this section, on the application of either party, issue a summon to any witness, directing him to attend or to produce any document other thing. ठीक है, nothing in this section shall be deemed to be in derogation of the power of magistrate to proceed under section 107. What is 107? 107 में था security for keeping peace for good behavior by executive magistrate when they see there is a breach of peace possible. तो यहाँ पे तो क्या है ना, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द मैटर। यहाँ पे वी आर ट्राइंग कि पार्टीज कम टू अस एंड वी डिटरमाइन इशू क्या है भाई। ठीक है, कौन पोजेशन में था, किसकी प्रॉपर्टी है, क्रॉप किसकी है, वो सब, बट वी विल स्टिल टेक द सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर 107, जिसका है 1 ईयर के लिए। ठीक है। Power to attach subject of dispute and to appoint a receiver. If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of section 145 considers the case to be one of emergency, or if he decides that none of the parties was then in such possession as is referred to in section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until the competent court has determined the rights of the parties thereto, with regard to the person entitled to the possession thereof. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने 145 में ऑर्डर पास करना है कि डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, लेकिन कोर्ट इज नॉट एबल टू डिसाइड कि पोजेशन था किसके पास पहले, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए पोजेशन किसके पास तो रिस्टोर कर देंगे पोजेशन और उसके बाद राइट्स डिटरमाइन होंगे। लेकिन इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि पोजेशन किसने किसको भगाया। We don't know who had the actual possession, legal possession. In that case, what the court will do, court will attach the subject matter of dispute and then the competent court will determine the rights of the parties and then the possession will be given, provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of peace with regard to subject matter of dispute. ठीक है, तो हमने ये इस प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो रहा था, दैट प्रॉपर्टी वाज टेकन, अटैच कर दी, अभी किसी की नहीं है, ये गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पर अब ये दो these two people who are fighting, अब लग रहा है कि हाँ there is a peace, there is no breach of peace,
Then in such situation, this attachment will be released, will withdrawn. When the magistrate attaches the subject of the dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by the civil court, make such arrangement as he consider proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all the powers of receiver appointed under Code of Civil Procedure. इसमें रिसीवर अपॉइंट होएगा और उसकी सेम पावर होंगी जो CPC में है. Provided that in the event of a receiver being subsequently appointed in relation to subject of dispute by any civil court, the magistrate shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court. ठीक है. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीवर अपॉइंट कर रहा है फॉर द प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैटर सिविल कोर्ट में चला गया तो सिविल कोर्ट अपना रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, तो ये रिसीवर इस रिसीवर को हैंड ओवर कर देगा. May make such other incidental or consequential order as may be just. Okay, not very difficult. 145, dispute concerning land or water which is likely to cause breach of peace, और इसमें order में है restoration है. Then attaching the subject matter of dispute and appointment of receiver, ये दो solution है. And now dispute concerning right to use of land or water. Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists regarding any alleged right to user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the ground of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time, and to put in same as 145. Same as 145 कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट आती है और उससे इंफॉर्मेशन आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है जिससे पता लगता है कि डिस्प्यूट इज लाइकली टू कॉज, कि कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, और ये डिस्प्यूट क्या है, alleged right to use any land or water, then he shall make an order requiring parties to attend the court. And same land and water का meaning बताया. Magistrate shall then pursue the statements so put, hear the parties, receive all such evidence that may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take further evidence, if any, as he thinks necessary, and decide whether right exists, and the provision of section 145 so far as may be apply in case of such inquiry. Inquiry करेंगे कि भाई कौन है और इंक्वायरी करके डिसीजन ले आएंगे. If it appears to such magistrate that such right exists, he may make an order prohibiting any interference with the exercise of such right, including in proper case an order for removal of any obstruction in excess of such right. तो यहाँ पे इशू क्या है, राइट का, कि राइट है या नहीं. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, राइट कि यूज, राइट टू यूज. सपोज एग्जांपल, ये एक खेत है और यहाँ से लोग आते जाते हैं. ये इस इंसान ए का खेत है, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो ये ईजमेंट्री है, तो नाउ इसने बोला कि अब कोई नहीं जाएगा, तो राइट टू यूज क्वेश्चन में आ गया. ये इशू है तो कोर्ट पार्टीज को अपने पास बुलाएगा, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में एविडेंस लेगा दोनों से, उसके बाद डिटरमाइन करेगा कि राइट है या नहीं. अगर राइट है तो इसको प्रोहिबिट करेगा कि यू विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सरसाइजिंग ऑफ दिस राइट, यू विल नॉट इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज, यू विल नॉट इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट. ओके, provided that no such order shall be made where the right is exercisable at all time of year unless such right has been exercised within 3 months next before receipt under subsection 1 of the report of the police officer or other information leading to institution of the inquiry, or where the right is exercisable only at a particular season or on a particular occasion unless the right has been exercised during the last of such season or on the last of such occasion before such exit. तो ये बोल रहा है कि जो राइट है, या तो तुम उसे साल भर एक्सरसाइज कर सकते हो कि तुम डेली आते जाते हो,
या ये पर्टिकुलर सीजन में तुम एक्सरसाइज करते हो या किसी ओकेजन में एक्सरसाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओकेजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये गांव है, इसमें ये कुआं है, और फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल है जिसमें रिचुअल है कि लोग यहाँ कुएं में आके पूजा करते हैं। ठीक है, कुएं की पूजा करते हैं, दिस इज द ओकेजन। या कोई ईयर है कि हम डेली इस रास्ते से आते जाते हैं, इस तरह का राइट है। तो जब तुम कोर्ट के पास जाते हो ना, तो यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव बीन यूजिंग दैट राइट। अगर ओकेजनल है तो तुमने लास्ट ओकेजन पे यू हैव यूज दैट राइट, या अगर सीजनल है तो तुमने प्रीवियस सीजन में यू हैव यूज दैट राइट। और या ईयर है तो 3 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने पिछले 3 महीने से राइटिंग यूज नहीं किया है। 3 महीने का विद इन 3 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट यू मस्ट हैव you must have been exercised, the right must have been exercised, okay? When in any proceeding commenced under subsection 1 of section 145, magistrate finds the dispute is as regards an alleged right of user of land or water, he may, after recording his reason, continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1. And when in any proceeding commenced under subsection 1, the magistrate finds that the dispute should be dealt with under section 145, he may, after recording his reason, continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1 or section 145. ये बोल रहा है कि अगर 145 में हमने सुनना शुरू किया लेकिन हमें पता चला कि ये जो राइट है, ये जो 145, देखो 145, 145 में तो क्या है कि किसी लैंड वाटर या बाउंड्री का डिस्प्यूट है। इसमें क्या है, हम इसमें अपनी पोजेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राइट एक्सरसाइज करना है। तो हमने फॉर एग्जांपल 145 में प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, पर हमें पता चला कि ये 145 का मैटर नहीं है, ये 147 का मैटर है, ये राइट का मैटर है। दे आर नॉट आस्किंग द ओनरशिप, दे आर नॉट आस्किंग द पोजेशन, दे आर जस्ट आस्किंग राइट टू यूज। तो हम अगर 145 में 45 में अगर हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट भी की है, then also you will be deemed to have started under 146 147. Now है local inquiry. Whenever a local inquiry is necessary for the purpose of section 145, section 146 or section 147, a district magistrate या subdivisional magistrate may depute any magistrate subordinate to him to make an inquiry, may furnish him such written instruction as may be necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of necessary expenses of the inquiry shall be paid. The report of the person so deputed may be read as evidence in the case when any cost have been incurred by any party to a proceeding under section 145, section 146, 147. The magistrate passing a decision may direct by whom such cost. Same section हमने पहले भी पढ़ा है in this chapter only. What is that section and what in what regard? Tell me in comments. Tell me what is that. We have read it in case of public nuisance by executive magistrate under section 139, 140. When they will be after 138 में जो order करना था उसके पहले, inquiry से पहले, there can be a local investigation or you can have an expert. Local investigation को you will give in written instruction and you will determine who will pay the price. That is 140. Okay. Now हो गया complete. Now we have completed chapter 10, but before that let's revise this. Let's revise this. Let me first erase. Hmm, okay, इतना ही बहुत है. Sufficiently erased. Hmm. Chapter
10 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें 4 सेक्शन है। ए अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड, बी पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड, सी इमरजेंसी सिचुएशन, एंड डी जो हमने अभी अभी पढ़ा है विच इज विद रिस्पेक्ट टू, बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ए अनलॉफुल असेंबली, ए में वी स्टार्ट विद 130, वी स्टार्ट विद 129 राइट, और 130 क्योंकि 125 में तो हमने मेंटेनेंस लिया, 126 में प्रोसीजर, 127 में ऑल्टरेशन, 128 में इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो 129, 129 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, 130 में रिक्विजिशन सेंट टू आर्मी, 131 में if executive magistrate is absent then army will take it, 132 में immunity कि गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया तो वो नहीं होगा। दिस इज व्हाट ए वाज। नाउ पार्ट बी was public nuisance starting from 133, power lies with executive magistrate, district magistrate and subdivision magistrate। पब्लिक न्यूसेंस कुछ दिए हुए 133 में कंडीशनल ऑर्डर आता है एंड द पार्टी विल बी आस्क्ड टू अपीयर शो कॉज या फिर एक्ट। 134 में यू सर्व देम, 135 में द ड्यूटी आइदर टू एक्ट, ओहो, आइदर टू एक्ट और टू शो कॉज। ठीक है, 135, 136 इफ देयर इज अ ब्रीच, 188 में पनिशेबल होता है, 137 is public right का denial, then 138 में the person appears to show cause then you find a final order, 139 में inquiry, 140 में local में इंक्वायरी प्लस इन्वेस्टिगेशन, 140 में लोकल इन्वेस्टिगेशन प्लस एक्सपर्ट। ठीक है, 141 में जो फाइनल ऑर्डर आया है 138 में उसको अगर नहीं फॉलो करोगे तो वो है करेक्ट। देन तो हमने 141 तक कर लिया था, देन 142, what was 142 रिवाइज, 142 was इंजंक्शन, इमरजेंसी केसेस में इंजंक्शन, एंड 143 कि अगर कंटिन्यूअस ब्रीच होगा उसको प्रोहिबिट करने के लिए। देन चैप्टर डी में तो 2 ही सेक्शन है, 144 एंड 144 ए, ये जनरल है, ये आर्म से रिलेटेड है, सॉरी सी। एंड नाउ वी कम टू डी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें 145 है, अगर लैंड या वाटर या बाउंड्री से रिलेटेड कोई राइट है तो उसका क्या है। एंड 146 में क्या था, हाँ, एनेक्स करोगे प्रॉपर्टी या रिसीवर अपॉइंट करोगे अगर यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन हु वाज इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। 147 was with respect to the right to use, correct, using the property. Then 148 is local inquiry. Then this is how we complete our chapter 10. And now we start with chapter 9, preventive action of the police. One of the important chapter, important है ये भी। Every police officer may interpose for the purpose of preventing and shall, to the best of his ability, prevent the commission of any cognizable offence. दो चीजें, एवरी पुलिस ऑफिसर, रैंक नहीं मेंशन है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, every police officer has the duty to prevent, to the best of their ability, commission of any cognizable offence. Important, cognizable offence की बात हो रही है। ठीक है, 150, every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate and to
any other officer whose duty is to prevent or take cognizance of the commission of such offense. फिर उसके बाद क्या करेगा? इसमें दे रखी है इंफॉर्मेशन. अगर किसी पुलिस ऑफिसर को receives an information कि some cognizable offense is going to be committed, in such a situation, that police officer who got this information will communicate to the person who is superior, senior, जो भी senior rank में जो भी होगा उसको communicate करेगा, because that is what is saying, police officer to whom he is subordinate, and on and to the police officer whose duty is to prevent it and to take the cognizance, उसको communicate करेगा. Communication basically. Information मिली, you communicate. 151. A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without order from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of offence cannot otherwise be prevented. Preventive detention. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है? आर्टिकल 20. तो ये यहाँ सीआरपीसी में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है. 20 डील करता है क्या? 22. 20 तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, डबल जियो पार्टी है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज है. 22 डील्स विद प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, तो एक पुलिस ऑफिसर, इसको पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस might be committed, और डिजाइन का पता चल गया है, एंड उसको लगता है कि it will not be prevented otherwise. In such a situation, he will arrest without warrant, without orders. No person arrested under subsection 1 shall be detained in a custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or any other law for the time being. 24 hours का time period है जिसका प्रिवेंटिव डिटेंशन रख सकते हैं. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, 142 prevention of injury to public property. A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable. और the removal और injury ठीक है यार, ये जस्ट कि हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? पुलिस ऑफिसर के पास है. प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, पब्लिक लैंडमार्क हो सकता है, अदर मार्क, ठीक है, ये सब है. Then 153 inspection of weight and measures. Any officer in charge of police station may, without a warrant, enter any place within the limit of such station for the purpose of inspecting or searching of any weight or measure or instruments for weighing used or kept therein whenever he has a reason to believe that there are in such place any weigh measure instrument for weighing which are false. अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज के पास रीजन टू बिलीव होता है कि कोई वेट मेजर से ये फॉल है, तो दे कैन एंटर एनी प्लेस विदाउट एनी वारंट. If he finds in such place any weight measure and instrument for weighing which are false, he may seize the same and forthwith give the information of such seizure of a magistrate having the jurisdiction. Complete chapter. Now, chapter 11 is also finished. Let's revise it quickly. Chapter 11 deals with preventive actions. नाम ही preventive actions है. में कितने सेक्शन है? 5. Chapter 11, 149 से 154. 149 ड्यूटी कि प्रिवेंट करेगा बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में प्रिवेंशन. 150 अगर किसी डिजाइन का पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गोइंग टू बी कमिटेड, ही विल इन्फॉर्म द सीनियर or the person who has the authority to take cognizance in this case. 151 preventive detention, 24 hours का टाइम पीरियड है. 152 is the public property की सेफ्टी, and 150
हाँ 153 is with respect to weights and measures, sorry 149 से 153 तो ओके 153 weights and measure अगर false है तो उसके लिए you can search any place without warrant, you can seize them and you can produce them before the magistrate.